Hi students, so now we are going to discuss about the endomembranous system in case of the cell. In case of the eukaryotic cells, there are certain cell organelles which have or which work in coordination with one another, and this coordination among the different cell organelles, all these cell organelles, they are all together called as the endomembranous system of a cell. So this it include the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. These are the four cell organelles which are working in coordination with one another, and all together these four cell organelles are called as the endomembranous system. So now we are going to discuss about all these cell organelles in detail. So let's start with the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Beta, I always says don't cram the terms. Just understand the meaning of the terms. Endoplasmic reticulum. That means inside the cytoplasm there is a reticulum. Reticulum means network. There is a network of some tubular structure which is called as which is scattered there in the cytoplasm. This is called as the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum divide the cytoplasm into two compartments, that is the luminal inside the ER and extraluminar, that means outside the ER. Fine. Further, we will have two type of ER depending upon that. The rough endoplasmic reticulum bear the ribosomes on its surface. So RER is involved in protein synthesis and secretion. Definitely, we know that ribosomes are the protein factories. So if they are attached on the endoplasmic reticulum, so it is involved in the protein synthesis. They are extensive and continuous with the nuclear membrane. Next is the smooth endoplasmic reticulum. Smooth, as the name is indicating, it do not bear the ribosomes on its surface. So here RER is involved in lipid synthesis and steroidal hormones. So we need to learn it is involved in the protein synthesis and secretion, whereas the SER is involved in lipid synthesis and steroidal hormone synthesis, as well as SER is also involved in detoxification of drugs, especially in the liver cells. Fine. So whatever the drugs we are consuming, what are the medicines we are consuming, that they will be detoxified in our lungs, in our liver by the SER. Fine. Now let's come to the diagram of the ER. If you can see here, we will have this foldings of the plasma membrane which is shown over here, and this folding of the membrane is called as the endoplasmic reticulum of the membrane inside the cytoplasm. Inside this we will have the lumen, and this is the extraluminal space. These are the smooth ER which do not have ribosomes attached. These are the rough ER which have the ribosomes attached over there. Now, the important thing about the endoplasmic reticulum is there that it is always in communication with the nuclear membrane. Fine. Always keep it in mind that is always in communication with the nuclear membrane. Reason being, whatever the type of proteins is to be synthesized, the synthesis of proteins command कहाँ से आती है, that will come from the nucleus, from the DNA. So for to synthesize a different type of proteins, the command always comes from the nucleus. So this ER is always in communication with the nuclear membrane. Fine. So this is all about the endoplasmic reticulum. Now we will come to our second cell organelle included in the endomembranous system, that is the Golgi complex. So you can see this is the structure of a Golgi complex. Here in case of the Golgi complex, it is having a concaved structure. This side is called as the cis phase. This side is called as the trans phase. And here you can also call them as the forming phase and the maturing phase on the other side. So here these long tubular structures which are present over here, they are called as the cisternae. In case of Golgi apparatus, we call them as cisternae. Now the link between the Golgi and endoplasmic, this side, the cis phase of the Golgi apparatus is always near to the ER, towards the endoplasmic reticulum. So from the endoplasmic reticulum, these foldings of the membrane, when they are filled with the suitable material,
like proteins or the lipids, it will get detached from here, and now this membrane will come here and join here. You can see यहाँ देखो ऐसे लग रहा है कि ये जो membrane है ये पीछे कहीं से आ रही है, it is coming from, तो ये कहाँ से आ रही है, ये ER से। ER की membranes जब वो प्रोटीन्स और जब वो लिपिड से भर जाती हैं तो वो यहाँ से सेपरेट होके वो यहाँ से निकल के आके इसके साथ जुड़ जाएंगी। फाइन, सो दिस इज एंडोमेम्ब्रेनस, इनके बीच में एक सिस्टम चल रहा है। फाइन, अब अगर हम बात करें गोल्जी का काम क्या है, तो हम कहते हैं द गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन दी पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब जो भी मटेरियल सिस फेज में ये सिस्टर्ने लेकर आ रहे हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा, पैक किया जाएगा और फिर इस तरह से वैक्यूल्स की फॉर्म में। तो इफ यू लुक एट द ट्रांस फेज, जो मैच्योरिंग फेज है, वहां पर अगर आप देखें तो वैक्यूल्स की फॉर्म में जो है यहां से डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर सेल के अंदर स्प्रेड किए जाएंगे, भेजे जाएंगे टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं स्लाइड। सो दिस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमलियो गोल्गी ने किया था इसको 1898 में, इसलिए हमने इसको जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है। और ये हमेशा न्यूक्लियस के पास, एज आई टोल्ड यू, ER is in communication with the nuclear membrane and next to that we will have the Golgi, so it is always near to the nucleus. It consists of flat disc sacs और cisternae, अभी दिखाए मैंने आपको, these are the cisternae, flat disc like जो structures हैं जिनका जो डायामीटर है वो 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन तक वेरी करेगा। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नेज आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो है हम देख रहे हैं दे आर पैरेलली पैक्ड, स्टैक किए गए हैं जैसे एक दूसरे के ऊपर, है ना। और इनका नंबर जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ने का नंबर वो सेल टू सेल वेरी करेगा। वैसे एक सिंपल सी बात है, जो सेल जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उसमें सिस्टर्ने का नंबर उतना ज्यादा होगा, जो जितना लेस एक्टिव होगा उसमें उनका नंबर कम होगा। फाइन, उसके बाद सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड near the nucleus with convex or the cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase। आपको मैंने दोनों दिखा दिए, cis phase है, trans phase है। These two phases are entirely different but interconnected, as I told you कि ये हैं तो अलग अलग, यहाँ पर आ रहा है मटेरियल, यहाँ से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, these two phases are interconnected. Then Golgi apparatus perform the function of packaging of material and its transport inside and outside of the cell, that I told you, वो पैक करके उनको different functions के लिए भेजा जाता है। Vesicles full of material come from ER and fuses with the cis phase and moves towards the trans phase, that I already discussed कि यहाँ से ये पैक्ड जो सिस्टर्ने हैं ये cis phase में आएंगे और धीरे धीरे trans phase की तरफ मूव करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी अपरेटस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग इसका काम है। देन गोल्जी अपरेटस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को गोल्जी अपरेटस में ही सिंथेसाइज किया जाता है। फाइन, अब यहां तक हम पहुंचे हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को लेकर। नाउ नेक्स्ट इज देयर, हम अब जो है वेसिकल्स और हम जो है लाइजोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो।